Jai Hind dosto, welcome to the session and very good evening to all of you people. So I hope all of you people are preparing well for the examination now. We'll be discussing today the current affairs for the month of March to June जो हमने बात की थी. मिसलेनियस टॉपिक्स हैं. कुछ कारणों के कारण मुझे ये सीरीज़ में प्रॉपरली आप लोगों के साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया. शायद आप लोग अब सोचें कि CAPF में पहले दिया होता तो शायद और क्वेश्चंस हो जाते, क्योंकि उस समय बहुत सारा बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा था, सर करंट अफेयर्स बाकी सभी 6 महीने के करवा रहे हैं, कोई 8 महीने के करवा रहे हैं और आप सिर्फ कह रहे हो 4 महीने. और मैं ये चीज़ बिल्कुल कहना चाहूँगा, आप सभी के सामने ये प्रूफ भी हो गई कि ऑल द क्वेश्चंस विच वर देयर इन द पेपर वर बेसिकली फ्रॉम दीज 3 टॉपिक्स, राइट. तो इसी चीज़ पर आज का जो सेशन है, वी आर गोइंग टू कवर अप द करंट अफेयर्स वेरी थॉरली हियर. अगर मेरी आवाज़ सभी को क्लियर आ रही है, एक बार ज़रा येस और नो कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट अप द सेशन, राइट. सो लेट स्टार्ट द करंट अफेयर्स पार्ट नाउ. आप सभी के सामने ये पहला जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये मिसलेनियस करंट अफेयर्स है मार्च से जून तक. मैंने आपको पहले भी बताया था ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके पेपर में. सारे के सारे CAPF के पेपर के क्वेश्चंस इन्हीं 4 महीनों के बीच में थे. सेम चीज़ होगी आपके CDS के पेपर में भी, राइट. बिल्कुल जी बिल्कुल, जल्दी ज़रा सभी लोग ज्वाइन करें. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति has signed a MOU with MNIT to set up a national center to ensure the protection of dams from earthquakes and other disasters. और MNIT मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में हैज़ बिन आइडेंटिफाइड एज द नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स, फर्स्ट सेंटर ऑफ इट्स काइंड. ये पेपर में आ सकता है जी, इसलिए याद रखिएगा. ये क्लियर है जी. विल डेवलप इंडिजिनस कैपेबिलिटीज फॉर मेकिंग द कंट्री सेल्फ रिलायंट एंड टेक्नोलॉजी हैंडलिंग टेक्नोलॉजी इशूज. चलिए अगला देखते हैं जी. Odisha's Mayurbhanj district and UT of Ladakh have found a place in Times Magazine 50 extraordinary destinations to explore, unveiled its list of world's greatest place of 2023. तो उसमें उड़ीसा का मयूरभंज है और दूसरा लद्दाख है जी. नेक्स्ट है ये क्वाड फॉरेन कंट्रीज. ये क्वाड आपके पेपर में आया था जी, राइट. मीटिंग विल बी चेयर्ड बाय डॉक्टर S जयशंकर with the participation of Foreign Ministry of Australia, Japan and US Secretary of US. ऑपरेशन कावेरी आपके पेपर में अभी अभी आया भी था जी, राइट. जो भी स्टैंडर्ड सिटीजन्स थे, स्टैंडर्ड मतलब जो फंसे हुए थे वहाँ पर सूडान के वॉर में, राइट, उससे निकालने के लिए. और IF नेम्ड C-130J ये यूज़ किया गया था. और नेवल शिप INS सुमेधा of Port Sudan as part of its contingency plan to evacuate stranded Indians. मेरे दोस्त लिखिएगा, साथ साथ पढ़िएगा, आपको हेल्प मिलेगी हिमांशु, राइट. दैट विल बी द बेस्ट वे टू कवर अप द थिंग्स. मतलब जो फंसे हुए थे वहां. चलिए फिर अगला देखते हैं जी. वर्ल्ड फेमस बसौली पेंटिंग, ये पक्का इस बारी पेपर में आएगी जी, पक्का कह रहा हूँ. CDS के पेपर में आएगी, जिसको GI टैग मिला अभी अभी. बसोली पेंटिंग कहाँ की? कठुआ की. फर्स्ट इंडिपेंडेंट GI टैग प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू रीजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बसोली पेंटिंग. ठोक के रखिएगा, पेपर में आने ही आने इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर डाल रहा है UPSC. सो लेट्स मेक श्योर दैट वी कवर अप दीज थिंग्स. अब दोस्त ज़रा जल्दी ज़रा एक बार शेयर भी करिए दबा के, ताकि बाकी लोग जुड़ सकें और सेशन में हम बढ़ सकें आगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन देन. जय हिंद सुमंत जी. देन निशा तनवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्विसाइड लद्दाख वुड कार्विंग, लद्दाख सिंकोस has become the first handicraft from the UT to be granted as GI tag. ये भी याद रखिए, सिंह कोस. नेक्स्ट आइए जी.
A constitutional bench headed by Sanjay Kishan Kaushal exercise of power 142 of the constitution as the discretion to dissolve the marriage on the ground of its irretrievable breakdown. 6-month waiting period has also been dispensed away with before grant of divorce by mutual consent. Next है जी, ports, shipping, waterways. Sarbananda Sonowal will be receiving the first Indian cargo ship at सितवे पोर्ट. ये पक्का याद रखना, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा आपके सीडीएस के पेपर में ये भी क्वेश्चन आएगा जी. सितवे पोर्ट पक्का पक्का याद रखिए. सितवे पोर्ट इज इन म्यांमार, जो इंडिया डेवलप कर रहा है. कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इंडिया डेवलप कर रहा है ये पोर्ट, पक्का पक्का याद रखना. नेक्स्ट, डॉकी लैंड पोर्ट, 10th लैंड पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वॉज इनॉग्रेटेड एट डॉकी. डॉकी कहाँ पर है? मेघालय, बाय मिनिस्टर नित्यानंद राय. The Docky land port will serve as important economic transportation hub between India and Bangladesh. Again very very important, मेघालय में है जी ये पोर्ट, लैंड पोर्ट जो बनाया गया. नेक्स्ट मारिए जवाब. यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट. क्लियर है जी? कहाँ पर? देहरादून में. नेक्स्ट, आई ड्रोन इनिशिएटिव, ये है क्या चीज़ जी? ICMR अंडर द हेल्थ कंडक्टेड अ सेल्फ ट्रायल ऑफ ब्लड बैग डिलीवरी बाय ड्रोन्स अंडर इट्स आई ड्रोन इनिशिएटिव. नेक्स्ट है इकोसोक, ये जी सब्सिडरीज बॉडीज. इंडिया इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ UN स्टैटिस्टिकल कमीशन, द कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड at joint UN program at HIV/AIDS for the ECOSOC of UN. The subsidiary bodies of the ECOSOC Statistical Commission is the highest body dealing with the international statistic activities and is responsible for standard setting in the field of statistics. Right, next बढ़िए जी क्वेश्चन पे. Kerala Chief Minister inaugurated the centenary celebrations of Vaikom Satyagraha, right, in the temple town of Vaikom in the princely state of Travancore. A non-violent agitation started marking the beginning of temple entry movements. ये पक्का याद रखें. वाइकॉम सत्याग्रह पहले न्यूज़ में भी रहा, जो कि 1924 में हुआ था, राइट, इन द टेम्पल टाउन ऑफ वाइकॉम इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रवनकोर. बिगिनिंग ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट. नेक्स्ट बढ़िए जी. बिल्कुल जी, अभी 8 AM क्लास नहीं होती सुमंत जी, आपको पता होगा. मैं रिवीजन कोर्स शुरू किया हुआ ज्योग्राफी का यूट्यूब पर ही. रोज़ आपकी 10:15 बजे ज्योग्राफी की क्लासेस हो रही हैं. आज मैंने सुबह आपको सारे ओशन करंट्स याद करवाए हैं. ओशनोग्राफी पूरी कवर कर रहा हूँ. क्लियर है जी? उनको कवर करिए, बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़िए. टेक जायंट एप्पल इन पार्टनरशिप विद NGO फ्रैंक वाटर स्केल्ड अप एफर्ट्स टू इम्प्रूव वाटर हाइजीन सैनिटेशन इन इंडिया. तो एप्पल जो है ये पार्टनरशिप कर रहा है फ्रैंक वाटर. अ पायलट प्रोजेक्टेड अनेकल तालुक इन आउटर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बेंगलुरु. नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ नैनो लिक्विड डैप डाई अमोनियम phosphate fertilizer for the benefits of farmers and making the country self-reliant. Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited launched the nano liquid urea liquid, a nutrient to provide nitrogens to plants as an alternative to the conventional urea. Clear है जी? ये भी याद रखिएगा. DAP is the second most widely used fertilizer in India. DAP, right everyone? नहीं, वो अपने डिफेंस गुरुकुल पे चल रही हैं आपकी क्लासेस. मेरी रोज़ 10:15 बजे. मैंने आपको लिंक भी शेयर किए हुए हैं यार. आप तो ऐसे बात करो जैसे आपको बताया नहीं गया. सेंट एंथनीज फीस्ट वॉज हेल्ड एट द काचादीवू आइलैंड इन श्रीलंका. इंडियन पिलग्रिम्स रीच द आइलैंड टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल फीस्ट. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाला अभी हमने पढ़ा है, जयपुर में जो खोला जा रहा है. The death toll of
tragic train accident. Balasore's Bahananga station in Odisha has risen to 238. Several carriages from the Shalimar Chennai Coromandel Express derailed at Balasore district and hit a stationary goods train, and several of its coaches ended up on the opposite track. Another train, the Havla Superfast Express from going Javadpur to collided with the overturned branches. In order to prevent hoarding and unscrupulous speculation, and also to improve the affordability of the consumers in respect of tur dal and urad dal, Government of India has issued an order where it has imposed stock limits on the pulses applicable to wholesalers. Hyderabad International Airport achieved a global feat by recording the most punctual airport in the world. क्लियर है जी, ये भी सभी को याद रखेगा. हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज अचीव्ड a global feat by recording the most punctual airport in the world. Next one is India and Bangladesh have recently launched 50 startup exchange program to promote collaboration and exchange between the startup ecosystems of the two countries. Again very important, India and Bangladesh ने 50 startup exchange program, पूछ सकता है किसके बीच में, इंडिया और किसके बीच में, बांग्लादेश के बीच में जी. जो जो सर्कल कर रहा हूँ ये आपने याद रखना. गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे, a new mile by expressing laying bituminous concrete across 100 lane kilometers in 100 hours. Export curbs on petroleum products that compel oil refiners to sell a significant chunk of the export volumes in the domestic market. Recently, Aam Aadmi Party has been given the national party status, very important. And All India Trinamool Congress, Communist Party of India and National Congress Party, and withdrew the national status, national party status. नेक्स्ट आइए जी, एनसीपी को भी छोड़ दिया, सीआईपी भी और एआईटीसी, इन सभी का नेशनल पार्टी का स्टेटस चला गया और आपका आ गया. थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम. बहुत कम आया, काम आया भाई, लोगों को पता क्या लगना, कम आया. शर्मा भाई सही तरह लिख भाई, सभी को कम आया लगना कि आपका कोर्स बहुत कम आया. फिटे मुंह मेरा होए ना, खून पीड़े जाके शेयर कर, जाके सभी को सब्सक्राइब तो करवाइए. सभी को बता दिया है मैंने अभी अभी. अनअकैडमी पर इस समय ऑफर चल रहा है, फ्रीडम 20% ऑफ है. 3 महीने की सब्सक्रिप्शन, 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री है. याद से अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे, परवरदिगार के नाम पे ये कोड पक्का लगवाएं, प्रतीक तक्षशिला. क्लियर है जी. इस कोड को लगवा के जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइएगा. जिसको भी ऑनलाइन पढ़ना है याद से भूलना मत. बहुत कम आया, मैंने यही पढ़ा, जबकि चारों के 6 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के जो हमने बिल्कुल सिंपल लॉजिकली किए. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंटायर ब्रॉड गॉज नेटवर्क किया गया, सेंट्रल रेलवे का मुंबई हेडक्वार्टर वाला. नेक्स्ट 5.9 million tons of lithium ore has been found in Salal Hema ores of Raisi district. Raisi district में पहले भी कोयला बहुत है. जम्मू एंड कश्मीर is not yet established. मेरी एक रिक्वेस्ट है शिवम, उस क्लास में जाके जो उसका है ना, जहाँ पर लोगों ने पता नहीं क्या उटपटांग लिखा है, वहाँ पर जाके लिख के आइएगा याद से, जो लिंक जिसमें एनालिसिस किया. मैं मानता हूँ 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए, लोग ऐसे टूट पड़े हैं कि तुमको कुछ आता नहीं, तुम क्या करते हो, तुम टकले हो. भाई मैं टकला हूँ, तुम्हारे बाप का कुछ जावे है. सर्बनंदा सोनोवाल, इंटरनेशनल क्रूज वेसल MV Empress, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल फ्रॉम चेन्नई टू श्रीलंका. याद रखिएगा जी. क्लियर है जी, ये भी याद रखिएगा. चेन्नई टू श्रीलंका भी अभी पहली इंटरनेशनल क्रूज वेसल गई है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल एग्जिट टेस्ट, जिसको नेक्स्ट कहा गया, हेल्ड फ्रॉम 2024 एज पर द मेडिकल कमीशन. नेक्स्ट विल सर्व एज अ कॉमन क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट्स, रिप्लेसिंग नीट, PG एंड FMG फॉर दिस ग्रेजुएशन. Next, a celt belonging to Neolithic period
discovered in Puthinam village in Dhammarpuri, as used as a plow or an axe made of dolorite stone. Smriti Irani will inaugurate the Women Labourers Convention at Kerala unit of Bharatiya Mazdoor Sangh in Trivandrum. Prime Minister Narendra Modi will be launching a special commemorative postage stamp of 75 rupee coin with the new parliament building. Central government recently issued a notification declaring the ancient temple of Tungnath, Uttarakhand, a monument of national importance. Highest Shiva temple in the world. याद रखिए तुंगनाथ टेम्पल जो है उत्तराखंड में है, राइट, built by Pandavas in the Indian style of architecture, has a dozen shrines of other gods surrounding the temple. Next one, official sources. Mansukh Mandavia was reported approved the inclusion of Serum Institute's COVAX on CoWIN portal as a heterologous booster dose for adults. Not at all important. अगला जी, तुलसी घाट restoration project of Varanasi during his visit to Kampala, जयशंकर ने जो किया अभी. The Tulsi Ghat renovation project is an initiative aimed at enhancing the aesthetic appeal of Varanasi, the oldest inhabited city in the world. Biratnagar Declaration. Nepal India Literature Festival concluded at adoption of 10-point Biratnagar Declaration. The festival was organized by Biratnagar Metropolitan City and Kranti Dhara Literature Academy of Merit India. Next is BIS launched first series of lesson plans under learning sciences as standards. Right, the first ever national training conclave effort by the government aiming to strengthen the training infrastructure for civil servants across India. International Exhibition and Convention Center Pragati Madan Capacity Building Commission was sponsored by national program for this thing. Next है जी, काफ़ी important है, नीति आयोग और United Nations in India, signed Government of India United Nations Sustainable Development Corporation framework. Right, 4 pillar: people, prosperity, planet and participation. Government of India UNSDC 2023 to 2027 was led by Niti Aayog on behalf of Government of India. Robust participation of line ministries, state governments and UTs. Microsoft has launched Jugalbandi, a AI-driven multilingual chat bot. Next आइए जी, Spring Harvest Festivals New Year's are celebrated on 14th and 15th April with new great enthusiasm. Bihu Assam में, Lohri and Baisakhi in Punjab, Poila Baisakh in West Bengal, Vishu in Kerala and Puthundu in Tamil Nadu. Next मारिए जी, agenda of Vedic knowledge tradition. Indira Gandhi Center for Arts. Next, National Institute of Urban Affairs, which works under this, first Urban Climate Film Festival, U20 engagement events. Right, Ministry of Housing and Urban Affairs, the French Development Agency and European Union, one of the engagement groups of G20, platform for cities from G20 countries to facilitate discussions on various important issues of development. Next है जी आपका Mesolithic period rock painting depicting a person tilling a piece of land has been found by D. Kanna Babu. Yoga Day event at United Nations headquarters in New York achieved a Guinness World Record, an historic 9th International Yoga Day. Witnessed the participation of individuals. Let's say new parliament building installed a sacred Singal in the Lok Sabha chamber. और ये बिल्डिंग बनाई किसने? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. अहमदाबाद बेस्ड HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट.
managed by architect Bimal Patel. Now sitting for 888 members in the Lok Sabha and 384 members in the Rajya Sabha. New building is triangular shape mostly because of the plot of land that is built on is a triangle. Lok Sabha chamber is a peacock theme and Rajya Sabha is lotus theme. Next study, largest lithium reserves, Chile, is now partnered with India in tapping lithium value chain, potentially extending technical expertise in exploiting the new established inferred lithium resources of 5.9 million tons in India. रियासी डिस्ट्रिक्ट को तो बताया ही आपको, इससे बनती है रिचार्जेबल बैटरीज फॉर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमरास एंड ईवीज. इसको ऑप्शन वाइट गोल्ड भी कहा जाता है. नेक्स्ट है जी, Supreme Court announced the formation of new constitution bench headed by D.Y. Chandrachud to series of petitions seeking legal recognition of same-sex marriage. ये बार बार न्यूज़ में रहा पर आया नहीं पेपर में. NDRI in Karnal has produced the first cloned female calf of Desi breed Gir named Ganga. Prime Minister Modi inaugurated longest railway platform in Hubli. World's longest railway platform in Hubli, Karnataka. ये पेपर में आपके एफकैट के पेपर में आ सकता है. श्योर शॉर्ट है जी. द श्री सिद्धारू राधा स्वामी जी स्टेशन इज़ नाउ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म. पहले गोरखपुर का होता था, अब यहाँ पर कर दिया गया जी. नेक्स्ट है जी, कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल ऐप. ये मोदी जी ने अभी अभी लॉन्च किया टू प्रिवेंट अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग दैट कैन कॉज डैमेज टू अंडरग्राउंड यूटिलिटी एसेट्स such as optical fibers. North India's first skin bank has been inaugurated at Safdarjung Hospital, New Delhi. Deceased donors can donate their skin, which will be helpful in treating burns. And skin can be donated within 6 hours of death, utilized for burns and trauma. Union Home Minister Amit Shah laid the foundation of Balidan Stambh at Pratap Park in Srinagar, J&K. Memorandum of Understanding between the Ministry of Culture and Canara Bank has dispersal of financial assistance to veteran artists scheme for financial assistance for veteran artists. India is set to ban the use of diesel powered 4 vehicles over 10 lakh population by 2027. The report commissioned by Oil Ministry targeted to phase out internal combustion engine 2 to 3 vehicle by 2035. First port taxi between National Noida International Airport in Jawar and the Film City. As per the UP Yamuna Authority has given the go-ahead of nation's first personalized rapid portal transit project. Andhra Pradesh launched 5156 crore Machilipatnam port works in state's Krishna district of Andhra Pradesh. The construction of the port and initial cargo of 45 is scheduled to be completed. Apple announces first retail store in Geo World Drive Mall in Mumbai. Another is in Select City Walk. Nandini Gupta, a 19-year-old girl, Rajasthan, Miss India 2023 at the 59th Grand Finale. Thodu Cultural Festival 2023 was held in Manipur. Hun Festival is an annual cultural festival in civilizing Thodu's communities of Manipur, celebrated at the arrival of New Year. Supreme Court said election commissioners should be appointed by the President based on the advice from the committee comprising Prime Minister, the leader of opposition in the Lok Sabha, leader of largest opposition party in cases it is not enough.
right? The same process will be appointing the chief election commissioner. Constitutional bench proceeds will be in effect until parliament passes law. Jal Shakti Abhiyan, the Catch the Rain 2023 campaign in New Delhi as a part of efforts to conservation of water. Mass campaign. Source sustainability of drinking water. सागर मंथन, ये अभी अभी आपको याद होगा. Ministry of Ports, Shipping and Waterways launched real-time performance monitoring dashboard. India's first ever report on critical minerals for India. 30 strategically important critical minerals identified by export. Beryllium, bismuth, cobalt, ये सारे याद तो होने नहीं भाई, छोड़ दीजिए, अगला बात करते हैं जी. India Pavilion having NLC India Limited, Coal India Limited, NMDC at the World Mining Congress in Brisbane. The Indian Pavilion at the WMC showcases countries' technological prowess in mining, energy sector and commitment. Next है जी, कौन पीनो पेपर तुमने देना, हार्डवर्क मेरे से करा रहे हो. दाम CERT in has issued an advisory regarding DAM, an Android malware capable of stealing sensitive data, bypassing antivirus programs and playing ransomware. तो ये DAM है क्या जी? an Android malware है जी. Next, Indonesia joint feasibility study on the development of Sabang port. ये भी पक्का याद रखें, सबांग पोर्ट 4-5 पोर्ट न्यूज़ में रहे. 7वें पोर्ट तो आपको पता ही है म्यांमार का, ये भी पेपर में बन सकता है. RBI paving the way for lightweight payment and settlements. Banka, that this system is designed to ensure minimal downtime critical situations. Sangathan se Samriddhi campaign. Rural Development Ministry Giriraj Singh with the aim of empowering marginalized rural households. Niti Aayog title report production and promotion of organic biofertilizers with special focus on improving economic viability of goshalas. Madhya Pradesh Minister Madhav National Park Shivpuri as a part of rehabilitated tigers. Shivpuri town is a part of the Upper Vidner Hills. Sakhya Sagar man-made reservoir within the park was designed Ramsar since this thing. माधव नेशनल पार्क आपको पता ही है, यहीं पर है. नेक्स्ट है जी, हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट. राइट, ग्रांट ऑफ एग्जेम्पशंस, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एज कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 3. First hydrogen powered train expected to commence in the 2023. Global Indian Icon of the Year award has been given to Mary Kom. UK India Awards in Windsor. Gujarat government signed a MOU with chip maker Micron Technology and test facility at Sananand in Ahmedabad. Government will provide 50% fiscal support to the total project, US-based firm, while state government will provide incentives representing it. Next is Forbes 2023 highest paid athletes: Cristiano Ronaldo, then Lionel Messi, and then you have is Kylian Mbappe. India is planning to appeal against a ruling from a panel. World Trade Organization and Asian country violated global trading rules by imposing tariffs on some IT products. Udhampur, Doda, Kathua parliamentary constituency is the most developed constituency in India. उसके बाद अमित शाह inaugurated क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क इन अहमदाबाद. भाई लोग इसको फोकस जरूर करें, पेपर में आने हैं क्वेश्चन इस पर ही. नेक्स्ट आइए, बेंगलुरु India's first post office constructed using 3D printing technology. युवा पोर्टल किस चीज़ के लिए, ये भी याद रखिएगा. कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग
potential young startups, very important for the paper. युवा पोर्टल स्टार्टअप्स के लिए 1 week 1 lab program. National Quantum Mission to aid scientific and industrial research and development in quantum technology, implemented by Department of Science and Technology. Right, create a vibrant and innovative ecosystem in quantum technology. India will be the 7th country to have a dedicated quantum mission after US, Australia, Finland, France, Canada. नेक्स्ट है जी, मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर खोला गया दिल्ली में, दिल्ली हाथ में. कोऑपरेटिव नाफेड ने was established militant experience center in collaboration with the agriculture ministry. Next है जी, Gabon's first agri SEC project from New Delhi. The project will be implemented by AOM with Centurion University as the technical knowledge partner. 30 farmers, 20 BSc, MSc Agri and BA Tech students from Gajapati aspirant. Next है जी, Anji Khad Bridge, very important. India's first cable-stayed Anji Khad Bridge is now ready for use. Is a national project, Udhampur Srinagar Baramulla link project. Kashmir with the rest of the country by train. It is constructed over Anji River, a tributary of Chenab, between Katra and Riyasi. Very important. बनाया किसने? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी. नेक्स्ट जी, एंटोनियो ग्यूटरीज हैज रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम हिज एनुअल रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ऑन चिल्ड्रन. नेक्स्ट, गेन्स 202 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम गेन्स 2023. A startup competition seeking participation from young entrepreneurs on themes of artificial intelligence in shipbuilding. Asia's first sub-sea research lab, very important. MIT World Peace University has built the first ever sub-sea research lab in Asia, the Center for Sub-Sea Engineering Research in Pune, to foster the multidisciplinary talent for global oil. NTPC विद्युत व्यापार निगम, फर्स्ट रूफटॉप फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट एट IIT जोधपुर. राइट, नेक्स्ट वन, Asia's richest person in the Forbes billionaire list with Mukesh Ambani has become the richest sports owner of all Forbes billionaire. Sinthan Snow Festival, Jammu and Kashmir, Kishtwar Tourism. 2-day Sinthan Maidan Kishtwar Snow Festival is being organized in collaboration with Kishtwar District Administration Kishtwar. Geoffrey Hinton, the man who won the Nobel Prize of Computing for his work on neural works, godfather of AI, is now speaking against dangers of this thing. Lal Bahadur Shastri Airport at Varanasi has become the first in India to reading launch. नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, आगे देखते हैं अभी और 2 ही रह गए हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 2-day मिलेट्स फेयर कम हुआ, और ये भी याद रखना सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जोधपुर में. राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 16%, वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट, डिस्कवरी कैंपस एट IIT Madras was established under Sagarmala program, very important. Shri Dharmendra Pradhan, one of its kind future of work exhibition under G20 EWG, put together on the sidelines of third education working group meeting.
at Bhubaneswar. Prime Minister Modi, first water metro in Kochi, very very important, built by Kochi Shipyard Limited, will be 8 electric hybrid boats. Kochi water metro will connect 10 islands, and it was funded by government of Kerala and German firm KFW. Global Ayurveda Festival, very very important, will be held in Trivandrum. Emerging challenges in healthcare and a resurgent Ayurveda. Amit Shah laid the foundation stone for permanent campus of National Academy of Coastal Policing in Dwarka. Virat Ramayan Temple, world's largest Ramayan temple in Bihar's East Champaran district, 2800 feet in length and 1400 feet in the. ये कुछ नहीं आना जी. Next one is Intersolar Europe 2023. Indian Renewable Energy Development Agency, IREDA. It's a mini Ratna, right? Ministry of New and Renewable Energy, participated in Intersolar Europe 2023. Next है जी, Infosys जो कि IT फर्म है, इसने अनवील किया अभी Topaz AI, first suite of services that combines data analytics, cloud and generative AI technologies to create value for clients. Linking India consider कर रहा power grid to those of Saudi Arabia and UAE. Undersea cables के through इनको power grid दे रहा है. India's power ministry has circulated cabinet notes for interministerial consultation. Next, India and UK have agreed to create India-UK Net Zero Innovation Virtual Center together in areas like decarbonization of manufacturing processes, transporting. आशा है कि आपको सभी को ये करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ समझने को मिला. These were the miscellaneous current affairs which I feel can come in the paper. Make sure that you make up the notes. सारे के सारे क्वेश्चंस मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको मंथ में मिलेंगे अप्रैल मई जून. क्लियर है जी? जितना हो सके इनको रिवाइज करिए और फोकस करिए इन पे. अगर आपको किसी को भी अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो याद से अभी 20% ऑफ है NDA के लिए, CDS के लिए, CAPF के लिए. तो कृपया ये रेफरल कोड पक्का लगाएं, प्रतीक तक्षशिला फ्रीडम फेस्टिवल, गेट 20% ऑफ ऑन CDS, CAPF एंड Afcat. राइट, 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने फ्री एंड तो नियरली 15 months. So it's a good opportunity for all of you people to join and subscribe. Thank you. Jai Hind everyone.